Hello everyone. In this video I'm going to start with marketing for class 11th unit 1 introduction to marketing. In this video I'm going to follow CBSE study material to explain you concepts related to this chapter. So what is marketing? What does the term marketing means? See, marketing का basically मतलब क्या है कि it starts with the ascertaining consumer needs. Consumers को क्या चाहिए? तो it starts along with the identification of what customer wants and then convert those needs into the product and services and then provide those goods and services to the final consumer. The main emphasis on profitability but along with the customer satisfaction. So marketing it begins before the production of goods and it continues even after the sale of goods. What does it mean? It basically means कि अभी प्रोडक्शन नॉर्मली क्या होता है कि हम क्या बोलते हैं गुड्स प्रोड्यूस होते हैं और फिर कस्टमर्स को प्रोवाइड करे जाते हैं बट marketing it does not start with the production, it starts before the production. How it starts before the production? Customer को क्या चाहिए, उसकी needs क्या है, उसकी wants क्या है? It starts with the identification of those needs and then it produces the goods and it sells those goods to the consumer, but the work does not stop there. The marketing continues even after the sale of the goods. कस्टमर्स को गुड्स प्रोवाइड कर दिए, आफ्टर सेल सर्विसेज हो गई, उनके कोई ग्रीवियंसेस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ द मार्केटर इवन टू प्रोवाइड दी such functions like after sale services. So it continues even after the sale of the product. So you can mark this definition, which is I'm going to highlight it. See, marketing refers to the process of ascertaining consumer needs, converting them into the product and service, and then moving the product and service to the final consumer segment with emphasis on profitability and customer satisfaction. तो जो मैंने अभी आपको बताया है वही चीज़ इसमें बोली गई है कि मार्केटिंग सबसे पहले स्टार्ट होता है कंज्यूमर नीड्स को आइडेंटिफाई करने में, फिर उन नीड्स को कन्वर्ट किया जाता है प्रोडक्ट सर्विसेज में और ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फिर कंज्यूमर तक पहुंचाए जाते हैं और ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड customer satisfaction. Customer is treated like a king. Customer satisfaction is the most important objective of marketing. So, according to Philip Kotler, he is known as marketing guru. ये भी आपका वन मार्कर में एग्जाम में आ सकता है. Who is your marketing guru? So, Philip Kotler. So, marketing is a social and managerial process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating and exchanging product and value with others. So please learn this definition, right? Okay. अब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं मार्केटिंग के जो हम लोग अभी पढ़ेंगे. तो फर्स्ट वन इज नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स. व्हाट इज नीड्स? Needs are the state of being deprived of something. Needs can be physical like hunger, clothing, shelter and sex. So basic needs जो होती हैं they are like food, clothing, shelter. Needs can be this. Then अभी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे Maslow hierarchy of needs. ठीक है, like love, belongingness, self-esteem. This I will cover in detail as we progress with the chapter. But अगर आपसे पूछा जाए कि needs क्या है, ठीक है, basic needs होती है. Like if you are hungry, then what you will require that time? You will require food. So food is your need, right? Now comes the definition of wants. What are wants? Wants, basically you can underline this. They are the form taken by human need. They are shaped by culture and individual personality. ठीक है, अब जैसे मैंने आपको नीड्स का बोला था आपको कि आपको अगर बहुत भूख लगी है, यू आर हंग्री, व्हाट यू विल रिक्वायर? यू विल रिक्वायर फूड. बट वांट आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, राइट? अगर आप बोलोगे कि आई वांट टू हैव पिज्जा ओनली, सो यू आर टेलिंग स्पेसिफिकली that you want pizza. So
एग्जाम्पल, अ पर्सन इन नॉर्थ इंडिया वुड सेटिस्फाई हिज हंगर विद राजमा एंड चावल। तो आप इसमें स्पेसिफिकली बता रहे हो। जब आप स्पेसिफिक, आपकी नीड स्पेसिफिक हो जाती है, उसी को हम वांट्स बोलते हैं। जैसे पर्सन फ्रॉम साउथ इंडिया वुड लाइक टू हैव फिश करी एंड राइस। सो अगेन व्हेन यू आर स्पेसिफिक, योर नीड्स बिकम वांट्स, राइट। अगर अगर बोला जा रहा है कि इफ वन इज हंग्री एंड ही इज टेलिंग आई वांट फूड, so that food is your need. But if you are telling specifically I want dosa, then it becomes want. Then what is demand? Wants which are backed by willingness and purchasing power is known as demand. So wants क्या है? See, if you want to have something but you are lacking money in your pocket, you don't have money or purchasing power to buy, your want will remain want. So वो wants demand में convert होती हैं if they are backed by willingness and purchasing power. If you have money, then your want will become demand. Okay. Then this particular topic, this is also very important. This I'm going to cover in the next video. Thank you.